Sadhya samutaya hi jata sambrama yatopasangam ya shakti verachutam Svabhajayam asa sat asanadipi Viham tamayantam aveksha sasanat Sadhya samutaya hi jata sambrama Yatopasangam ya shakti virachutam Sabhajayamasa sat asanadipi. Now chant one time the second verse of number 4. Tato davasa sadhu tadaibi pujito Nashidad urvyam abhimishya chasanam Vishnu piturnam shayanam mahadanam Viveksha loka charitanyanugata Dodavasa dutaya vipujito Nasidhat urvyam abhimishya chasanam Vishnu piturnam shayanam mahadanam Vivesha loka charitanyanugata Okay, first couple of devotees can chant the first verse, couple can chant the second verse. Daruryam abhimishya chasanam Krishna piturnam shayanam mahadanam Vivekya loka charitanyanugata Vaishnavi
Siddharityam Abhinishwatrasanam Sopishurnam Sharanam Naham Yeshaloka Charinavata Griham, to her house. Tam Ayantam Aviksha Sa Asanat Satya Samutaya Te Jata Sambrama Yata Upasangamya Saktivi Achyutam Bhajayam Asa Sat Asana Adivi. But also, you can read the translation. जब त्रिवक्रा ने उन्हें अपने घर की ओर आते देखा तो वह गड़बड़ाकर अति शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़ी हुई। अपनी सत्यों सहित आगे आकर उसने भगवान अंकित को उत्तम आसन तथा पूजा की अन्य सामग्रियां अर्पित करते हुए उनका सत्कार किया। Om Jnana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vichaitanyamanovistam Kapitam Yena Bhutale Vayam Rupapatam Madhyam Radhi Swapadam Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Asatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivamari Gaurabhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Hare Hare. So just a little comment on this verse has no purport. So we can, this is not the first time that Trivakra has appeared. That in the 42nd chapter, after Krishna entered into Mathura, just before going to the sacrificial arena, he met a young crippled girl with a beautiful face. तो 42 नंबर के अध्याय में भगवान कृष्ण जब यज्ञ की ओर जा रहे थे तो उससे पहले मथुरा में जब वो आते हैं तो एक ऐसी स्त्री को देखा था उन्होंने जिसका भी ऐसा ही रूप। Trivakra, which means that she's crooked in 3 places. त्रिवक्रा का अर्थ होता है कि वो 3 भागों में मुड़ी हुई। And was her neck, her chest, and waist were all distorted. तो उनकी गर्दन, उनकी छाती और उनकी कमर तीनों
अव्यवस्थित। So, but Krishna addressed her, "Oh, beautiful one, who are you?" लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको संबोधित किया कि हे सुंदरी आप कौन हैं? Although she was crippled, she was young. वो हालांकि कुबड़ी थी लेकिन वो जवान थी। So, from the purport of that meeting, it says that according to Vishwanath Chakravarti Thakur, she was actually a partial expansion of Satyabhama. तो उस श्लोक के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये वास्तविकता में सत्यभामा का एक आंशिक स्वरूप है। And she is the Bhu-Shakti of Krishna. And Radharani, or Satyabhama, is also Bhu potency, but she's also partially Chit potency. तो वो जो थी वो भगवान की भू शक्ति का अंश थी, लेकिन सत्यभामा और श्रीमती राधा रानी भी भू शक्ति है, लेकिन वो चित शक्ति भी। The full Chit potency is Srimati Radharani. पूर्ण रूप में चित शक्ति श्रीमती राधा रानी। And she manifests her Chit or her spiritual potency through Hladini Shakti. और वो अपनी चित शक्ति को आह्लादनी शक्ति के माध्यम से प्रकट करती है। So, Bhu Shakti means the spiritual portion of the goddess of fortune that that enlivens the earth. भू शक्ति का अर्थ है कि लक्ष्मी जी का वो अंश स्वरूप जो पृथ्वी को प्रकट करता है। So the fact that she was crooked in 3 places indicated that the earth had become burdened. Like when you get too burdened, you bend over. So she was bent over because the earth was burdened by the excess number of Kshatriyas. तो ये ऊर्जा की जगह से जुड़ी हुई थी, इसका एक अर्थ ये भी है कि पृथ्वी जो है उसके ऊपर भार बढ़ गया था, तो जब किसी के ऊपर भार बढ़ जाता है तो वो मुड़ जाता है, तो उसी प्रकार से उसका वो प्रतिनिधित्व करता है। So when Krishna asked her, "Who are you?" she said, "I am a servant of Kamsa." जब कृष्ण ने उनको पूछा कि आप कौन हैं, उन्होंने बताया कि मैं कंस की स्त्री हूँ। And she was, she was bewildered because immediately she was very attracted to Krishna. तो वो मोहित हो गई थी क्योंकि वो भगवान कृष्ण से अचानक से बहुत आकर्षित हो गई। But she was crippled. लेकिन वो ऊर्जा Just like that Devahuti, when she married Kardama Muni, she accepted all the austerities that he was performing. जैसे कि देवहूति माता का जब कर्दम मुनि से विवाह हुआ तो उसके बाद उन्हें बहुत सारी तपस्याएं स्वीकार। Before that, she was a beautiful princess. उसके पहले तो वो बहुत सुंदर राजकुमारी थी। But then she became emaciated, and Kardama Muni had said that he will leave her as soon as he has a son. और उसके बाद फिर वो एकदम जर्जरित हो गई थी और कर्दम मुनि ने उनको बोला था कि जैसे ही आपको पुत्र प्राप्त होगा ऐसे ही मैं आपको छोड़ दूंगा। So she was thinking, if I look like this, he will never be attracted to me, and we will never have a son, and he won't be able to fulfill his promise. तो वो सोचती थी कि मैं अगर इस प्रकार से जर्जरित रहूंगी तो कभी भी कर्दम मुनि मुझसे आकर्षित नहीं होंगे और फिर कभी भी हमारा पुत्र भी नहीं होगा और वो हमें छोड़ेंगे। Imagine how dedicated she is. आप देखिए वो कितना समर्पित थी कर्दम मुनि। Any ordinary woman would think, I won't have a son, otherwise my husband will leave. कोई सामान्य स्त्री ऐसा सोच नहीं सकती कि वे मेरा पुत्र ना हो ताकि मेरा पति नहीं हो। But she was so faithful, she was thinking, let me have a son immediately, let me become beautiful, not because I want to be beautiful, but then he will be attracted
he'll have a son, then he can lead. लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे सुंदर बनने दो ताकि ये मुझे पुत्र हो और वो मुझे छोड़ दे। So this is the nature of service. तो ये सेवा का स्वभाव है। For service, we accept any inconvenience. सेवा के लिए हम हर प्रकार की मुश्किल उठाते हैं। Otherwise, we're not surrendered, we're conditioned. तो नहीं तो फिर हम शरणागत नहीं होते। So Krishna decided that he would straighten her out. भगवान कृष्ण ने फैसला किया कि मैं इस पूजा को He put his foot on her toes and his fingers under her chin and went like that. उन्होंने अपना अंगूठा और उंगली उनके जोड़ी पे रखी और उनको फिर सीधा किया। She turned into a beautiful woman with perfectly proportioned body, like very, very beautiful. और फिर उसके बाद तो वो एकदम सुंदर स्त्री बन गई, उनका शरीर एकदम सुडौल हो गया। And immediately because previously she was crippled, she was attracted to Krishna, but she's thinking, why would anyone be attracted to me? तो पहले तो वो ऐसे पूजा थी तो उनसे कोई आकर्षित नहीं होता था, लेकिन जब वो सुंदर बन गई फिर भी वो सोच रही थी कि मैं तो इस प्रकार तो मुझसे तो कौन ही आकर्षित। But now that she's very beautiful, her desire to have Krishna satisfy her in a ordinary way became very strong. लेकिन जब वो इस प्रकार से सुंदर बन गई तो फिर उनका इच्छा बहुत प्रबल हो गया कि कृष्ण को कैसे वो सामान्य रूप से। And she said, please, I'm so grateful to you, please come to my house. उन्होंने भगवान को बोला कि मैं आपके बहुत कृतज्ञ हूँ, कृपा करके मेरे घर आइए। And according to the purports, the previous purports in the previous chapters, Vishwanath Chakravarti Thakur, sometimes he creates these conversations. तो आगे के कुछ तात्पर्यों में हम देखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक प्रकार का संवाद को पैदा करते हैं। So she said, come to my house, and Krishna said, why? Are you going to feed me dinner? तो पूजा ने बोला भगवान को क्या कृपा करके मेरे घर आइए। तो कृष्ण सामने पूछते हैं कि क्यों आप मुझे भोजन देंगे। Of course, she had other intentions, and she said, no, please come, I'm so grateful, you must come. तो हालांकि उनके कुछ और उद्देश्य थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको कृष्ण को बोला कि नहीं, कृपा करके आप आइए। And then Krishna said, certainly I will come, but right now I have other things to do. तो भगवान ने उनको कहा कि हाँ, मैं जरूर आपके घर आऊंगा, लेकिन अभी तो मुझे कुछ जरूरी काम है। So Krishna was in a difficult situation, as he is in many times. तो भगवान फिर ऐसी जटिल स्थिति में पड़ गए जिसमें वो कई बार पड़ गए। He was exhibiting 3 rasas at one time. तो 3 प्रकार के रस एक साथ प्रदर्शित कर रहे। He was exhibiting conjugal rasa with kubja or Trivakra. वो उपजा या त्रिवक्रा के साथ माधुर्य रस का प्रदर्शन कर रहे थे। He was exhibiting hasya rasa with his cowherd friends who were laughing at what happened. और वो अपने गोप बालकों के साथ हास्य रस का भी प्रदर्शन कर रहे थे जो हो रहा है। And he was exhibiting adbhuta rasa when he straightened her out. And how did he do that? तो और अद्भुत रस का भी भगवान प्रकाश कर रहे थे क्योंकि सब लोग वहां पर देख रहे थे कि अरे ये क्या हो गया। So Krishna, just by one action, he can accomplish so many things. ये भगवान कृष्ण अपने एक कार्य के द्वारा बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। And therefore, he's addressed in this verse as Achyutam. That she's very surprised that he has shown up. Therefore, she gets up from her chair and running around, and her assistants. She's a prostitute, and I got to fix everything up. Krishna has come. तो इसलिए भगवान को अच्युत कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान जैसे ही आए तो पूजा एकदम से आश्चर्यचकित हो गई कि वो भगवान आ गए।
और क्योंकि वो तो वेश्या थी तो इसीलिए उसको सब कुछ सही करना था, तो अपने सहचरियों के साथ सब कुछ सही करने में तुरंत लगी। So Achyuta means that he was intending to fulfill his promise. अच्युत का अर्थ होता है कि भगवान अपना वादे को पूरा करने के लिए सक्षम। His promise is infallible. उनका जो वादा होता है वो कभी भी विचलित करते नहीं। And she was seeing him as Achyuta, the most perfect person who always honors his word. तो पूजा भगवान को अच्युत के रूप में देख रही थी कि ऐसे भगवान कि जो कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं। And so, this is the nature of the Supreme Personality of God. तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वभाव। Therefore, we should always feel full confidence that Krishna also is acting in such a way for our benefit. तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे लिए भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं। And so then going to the next verse, we'll just repeat the word for word for the next verse. तो हम अगले श्लोक की ओर जाएंगे, तो उसका मैं शब्दार्थ करता हूँ। Tata Udava Sadhutaya साधु पुरुष की तरह Vipujita पूजित Nashidat बैठ Urbhyam जमीन पर Abhimisha स्पर्श कर Cha तथा Asanam आसन कर। Krishna भगवान श्री कृष्ण Api तथा Turnam अभिनव Shayanam सेव कर Mahadhanam अत्यंत वैभव Vivesha ले Loka मानव समाज का Acharitani आचरण Anubrata. अनुकरण करते Okay, what's the translation? अनुवाद। उद्धव को भी सम्मान युक्त आसन प्राप्त हुआ क्योंकि वो साधु सदृश पुरुष थे। अतः उन्होंने उसका स्पर्श भी किया और उसके पश्चात स्पर्श कर बैठे। तब भगवान श्री कृष्ण मानव समाज के आचारों का अनुकरण करते हुए ऐश्वर्यशाली सज्जा कर लिए। तात्पर्य आचार्य के अनुसार उद्धव अपने स्वामी के प्रति सम्मान व्यक्त करने की दृष्टि से उनके समक्ष ऐश्वर्यशाली आसन पर नहीं बैठे, प्रत्युत उसे अपने हाथ से छुआ और स्पर्श कर बैठे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण त्रिवक्रा के घर के दूसरी कक्ष में स्थित शैया पर थे। So sometimes we may visit someone or they may come to visit us and we give them a garland. तो कई बार हम किसी के यहाँ जाते हैं या कोई हमारे यहाँ पर आता है तो हम उनको फूलों की माला प्रदान करते हैं। But if someone feels that they are not, they're in the presence of a superior, we see they'll immediately take it off. तो हम देखते हैं कि यदि उस व्यक्ति को अगर लगता है कि मेरे से कुछ वरिष्ठ यहाँ पर उपस्थित हैं तो वो तुरंत उस माला को फिर निकाल देते हैं। This is Vaishnava etiquette, or this is proper social etiquette also. One should never be honored before a superior. तो ये वैष्णव सदाचार है और ये लोक में भी सदाचार है कि किसी वरिष्ठ के आगे व्यक्ति को सम्मान स्वीकार नहीं करना। Of course, sometimes people who generally get honored all the time, they're expecting that. और कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को हमेशा आदर मिलता है तो वो लोग फिर आदर की आशा भी करते हैं। So they won't take off the garland. तो वो लोग फिर अपना माला नहीं निकालते। They'll think, why did I get such a small one and somebody else got a bigger one? वो तो ये सोचते हैं कि मुझे इतना छोटा माला क्यों मिला, उसको तो इतना बड़ा है।
Therefore, we have to be very careful. The false ego is very powerful. तो फिर इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। मिथ्या अहंकार बहुत शक्तिशाली। Why is this devotee like this? Why can this person distribute more books? Why can this person cook better than me? So, ये बहुत ऐसा क्यों है? ये मेरे से ज़्यादा पुस्तक क्यों वितरण कर रहा है, कर पा रहा है? ये ऐसे मेरे से कैसे आगे बढ़ेगा? actually, in Krishna Leela, Srimati Radharani is the best cook. तो कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी सबसे अच्छी रसोई करती है। But she goes to Mother Yashoda and she learns how to cook from Mother Yashoda. लेकिन फिर भी वो यशोदा माता के पास जाती है और उनसे सीखती है कि अच्छी रसोई कैसे करनी है। Even though she's the best cook, but to follow the proper etiquette, she acts in this way. तो हालांकि वो सबसे अच्छी रसोई करती है, लेकिन फिर भी वो सदाचार का पालन करने के लिए इस प्रकार से सीखने के लिए जाती है। So in the same way, Krishna went, and after he saw Uddhava make his touching the bed, touching the seat, then Krishna went in the inner chamber and sat down on the bed. तो इसी प्रकार से कृष्ण ने जब देखा कि उद्धव जी ने तो आसन को स्पर्श किया, तो इसीलिए भगवान अंदर के कमरे में चले गए। And so this also indicates that Uddhava, by touching the seat, he accepted the gracious offer, but he could not sit. When Krishna was sitting, he did not want to sit on the same level. तो इसका अर्थ ये होता है कि उद्धव जी ने हालांकि उनको दिए गए सम्मान का सत्कार कर लिया, लेकिन फिर भी वो भगवान के समान आसन पर नहीं बैठना चाहते। Srila Prabhupada said, he recounting that first time he met Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he sat on the same level. प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब वो भक्तिसिद्धांत महाराज को पहली बार मिले, तो वो एक समान आसन पर बैठे। There was another wealthy man who also sat on the same level. और एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति भी ऐसे ही समान आसन पर बैठा। So Prabhupada said that his Guru Maharaj chastised this wealthy man. प्रभुपाद ने बोला कि उनके गुरु महाराज ने उस धनी व्यक्ति की आलोचना की। You think that you can, because you have some money, you can sit on the same level, Baba? No. तो भक्तिसिद्धांत महाराज ने बोला कि अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके पास इतना सारा धन है, इसीलिए आप समान आसन पर बैठ सकते हैं? And the man got down immediately. और फिर वो व्यक्ति एक तुरंत नीचे बैठ गया। Prabhupada said, I didn't know what to do. और प्रभुपाद बोले कि मैं नहीं जानता था मुझे क्या करना है। So I remained sitting there. मैं तो फिर बैठा। He didn't look at me or he didn't chastise me. उन्होंने मेरी और नहीं देखा, ना ही मुझे उन्होंने आलोचना। Because the next time I went, I sat on lower level. लेकिन फिर दूसरी बार जब मैं गया तो फिर मैं नीचे गया। So this is etiquette, you know. तो ये सदाचार है। This is culture. These are symbolic of a cultural society. तो ये सभ्य संस्कृति का लक्षण है। But at the same time, Srila Prabhupada said that too much devotion is a sign of a thief. लेकिन प्रभुपाद ये भी बताते थे कि अति भक्ति चोर का लक्षण है। So we should follow the proper etiquette, but not be excessive. तो हमें सदाचार का पालन करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा। Krishna mentions in the 6th chapter of Bhagavad Gita that one should be balanced, not on one pole or one extreme or the other. भगवान कृष्ण भगवद गीता के 6वें अध्याय में बताते हैं कि व्यक्ति का जीवन संतुलित होना चाहिए, उसको किसी भी एक अंत तक नहीं जाना चाहिए। When one is in the mode of passion, he's on the extreme pole of doing too much. जब व्यक्ति रजोगुण में होता है तो वो एक दिशा में बहुत ज्यादा करने, and when one is in the mode of ignorance, he's on the other pole doing too little. और जब तमोगुण में होता है तो वो बहुत कम करने वाले। But a devotee does just what's necessary for satisfying Krishna. लेकिन भक्त जो होता है वो बहुत संतुलित होता है और वो भगवान की प्रसन्नता के लिए जितना जरूरी है वही करता है।
But also sitting on the ground indicates some other things. तो जमीन पे बैठना कुछ और चीजों का भी संकेत देता है. Although there were other ladies there available. तो हालांकि वहां पे बहुत सारी स्त्रियां थी. Uddhava did not, sitting on the ground means he abstained. He understood who is Krishna. तो नीचे बैठने का अर्थ था कि भाई वो समझ गए कि कृष्ण कौन है. So Krishna came here for a purpose. कृष्ण किसी उद्देश्य से यहाँ पे. And Uddhava had firm faith that his purpose was not like a mundane, ordinary person. उद्धव जानते थे कि भगवान कृष्ण का उद्देश्य किसी सामान्य भौतिक व्यक्ति जैसा नहीं है. Kubja or Trivakra is now, she has everything decorated in such a way that would satisfy an ordinary man. तो पूजा या त्रिवक्रा ने सब कुछ इस प्रकार से सजाया था जैसे किसी सामान्य पुरुष को संतुष्ट करने के लिए किया. And as Uddhava said later, after Krishna's disappearance, he said, Tanmartya Lilapayikam Swayugamaya Balam Darshaya Tat Grihitam. He says that your pastimes are so wonderful. जब भगवान कृष्ण का तिरोधान हो गया उसके बाद उद्धव स्तुति करते हैं, उसमें बताते हैं कि आपकी जो लीलाएं बड़ी अद्भुत. You appear to be acting like an ordinary man. ऐसा लगता है कि आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे हैं. But Krishna is not interested in satisfying her lusty desire. लेकिन भगवान कृष्ण कोई काम वासना को संतुष्ट करने के लिए कार्य नहीं करते. But Krishna sees that this is her, Prabhupada mentions this is her profession. लेकिन कृष्ण देखते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण देखते हैं कि यही तो उसका कार्य है. So, Krishna says in Bhagavad Gita, Yam Anushmana Yudhyacha, that first you remember me and then you do your duty. तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि आप मेरा स्मरण कीजिए और अपना जो भी कार्य है वो. So her duty is prostitution. उनका कार्य तो वेश्यावृत्ति था. Therefore, she wants to serve Krishna according to her profession. और वो तो अपने व्यवसाय के अनुसार कृष्ण की सेवा कर रही है. She wants to offer Krishna what she is used to offering. तो वो तो कृष्ण को वही अर्पित कर रही थी जो हमेशा और वो अर्पित किया. So therefore, Krishna sits down on the bed and invites her to sit down. तो इसीलिए भगवान कृष्ण उस पलंग पर बैठे और वेश्यावृत्ति बैठने के लिए. But by being in touch with Krishna, she became purified. लेकिन जैसे भगवान के संपर्क में वो आई वो उसका शुद्धिकरण हुआ. It's like Srila Prabhupada told the story that once there was a thief who was hearing Krishna Leela and hearing how Krishna has so many beautiful ornaments and diamonds and jewels. प्रभुपाद जी एक कथा बताते हैं, उसमें बताते हैं कि भाई एक चोर था जिसने कथा में सुना कि भगवान कृष्ण कितने सुंदर है और उनके गले में सब जगह बहुत आभूषण है सुंदर. So he thought, he's just a little baby and he has all these jewels. Let me go find him. I can take those jewels. तो उसने सोचा कि तो छोटा सा बालक है और उसके पास इतने सारे रत्न हैं, तो लाओ मुझे उसको ढूंढने दो, मैं सब ले लूंगा. So he found Krishna. तो उसने फिर कृष्ण को प्राप्त किया. So he thought, a little child, here, I'll give you a sweet. तो उन्होंने सोचा है कि उनको भगवान ने बोला कि यहाँ आओ, मैं तुमको एक मिठाई दूंगा. Now I gave you the sweet, now you can give me your jewels. मैं तुमको ये मिठाई देता हूँ, तुम मुझे अपने आभूषण दे दो. And Krishna said, no. तो कृष्ण ने कहा नहीं. He said, my mother will become very angry. मेरी माता मुझे बहुत प्रसन्न हो जाएगी. So I'm sorry, I can't give you the jewels. मुझे माफ कीजिए, मैं आपको ये सब आभूषण नहीं दे सकता. And Krishna left. और फिर कृष्ण चले. Then Krishna came back. और फिर कृष्ण वापस आए. And he said, yeah, okay, you can take the jewel. ठीक है, उन्होंने बोला कि आपको मेरे आभूषण लेने के लिए.
But because the man had performed devotional service and offered something to Krishna, he became purified. लेकिन अभी उस व्यक्ति ने कुछ सेवा कर दिया था क्योंकि भगवान को एक मिठाई दे दिया था, इसलिए अब वो उसका शुद्धिकरण किया। And he wanted to, he said, the only thing I want, my Lord, is your service birth after birth. तो फिर उसने बोला कि हे भगवान, अब तो मुझे जन्म जन्मांतर से काफी है। So also Kubja, by offering all this service to Krishna, she's becoming purified. उसी प्रकार से पूजा भी भगवान को इस प्रकार से सेवा कर शुद्धिकरण। So Uddhava is, by sitting on the ground, he's abstaining from any enjoyment other than simply being with his friend Krishna. तो नीचे बैठकर उद्धव क्या कर रहे थे कि वो भगवान कृष्ण के संग के अलावा किसी भी प्रकार के आनंद को नहीं ले रहे। So this is teaching us some valuable lessons. ये हमें बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करता है। First of all, that whatever our business may be, there's a way to offer it to Krishna. तो पहली शिक्षा ये है कि हमारा चाहे कोई भी कार्य हो, कोई भी व्यवसाय हो, उसका एक तरीका होता है कि कैसे कृष्ण को उसको अर्पित किया जाए। Just like one time here in India, Srila Prabhupada came in touch with a man who was selling liquor. यहाँ भारत में एक व्यक्ति था कि जो शराब बेचता था, तो एक बार प्रभुपाद जी का उनसे संपर्क हुआ। And he gave a big donation to Prabhupada. बहुत दान दिया। So Prabhupada did not want to discourage him from giving the donation. तो प्रभुपाद जी उनको दान देने से निरुत्साहित नहीं करना चाहते। But at the same time, Prabhupada had his duty to tell him this is not, not the best way to make money. तो लेकिन प्रभुपाद जी को उनका कार्य भी करना था, उनको बताना था कि ये सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं है सेवा। So Prabhupada said that if you get the chance, you can sell this business and do something else. प्रभुपाद ने उनको कहा कि अगर आपको मौका मिलता है तो ये बिजनेस आप बंद करके देश में कुछ और पाएंगे। But if you can't, if you need it to sustain yourself, then do it as little time as possible and try to do something else. लेकिन अगर आपको अपना जीवन निर्वाह के लिए करना ही पड़ता है, तो कम से कम समय के लिए इसको कीजिए और बाकी के समय में कुछ करिए। Because Srila Prabhupada knew that he was not ready just to renounce his business and go live in the ashram or whatever, do. क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे कि अभी वो तैयार नहीं थे अपना ये सारा कार्य को बंद करके और आश्रम में आने। So this is the duty of the acharya, to know how to adjust things. ये आचार्य का एक कर्तव्य होता है ये समझना, ये जानना कि किस प्रकार से चीजों को किया जाए। So we can see here that Krishna is trying to satisfy the desire of his devotee, even though that desire is not totally pure because of karma, because of so many imperfections in conditioned life. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भगवान कृष्ण किस प्रकार से अपने भक्त की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, हालांकि उनकी इच्छा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है कर्म और अनेक प्रकार के अशुद्धियों के कारण। So Krishna is making the necessary adjustment. तो भगवान जरूरी फेरफार कर रहे हैं। And we can understand from this pastime that Krishna, he straightened out Kubja, and otherwise he's satisfying the desire of his devotee, but not necessarily in the way that devotee expects it to be satisfied. तो हम देखते हैं कि भगवान ने पूजा को जो है सुंदर बना दिया और यहाँ पर वो पूजा की इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि भगवान उसी प्रकार से भक्त की इच्छा पूरी करते हैं जैसे कि वो चाहता है। So if we are intelligent, we will allow Krishna also to rectify our situation in the way that he sees best for us. तो अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम भगवान को ये अवसर देंगे
कि वो हमारी परिस्थिति को उस प्रकार से बदले जिस प्रकार से भक्ति के लिए अच्छा। Instead of trying to force Krishna to do things in the way I want. और ऐसा नहीं कि भाई इस प्रकार से मैं चाहता हूँ उस प्रकार से भगवान मेरी परिस्थितियाँ। It may seem very innocent that someone thinks, I want to serve Krishna, but I would like to do it this way. तो ये सही नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ लेकिन किस प्रकार। But that's like thinking I'm more intelligent than Krishna as to how I should serve him. तो ये ऐसा ही हो जाएगा कि मैं भगवान से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ कि कैसे भगवान की सेवा करूँ। The service is important, and Krishna will accept it if it's done with love and devotion. सेवा महत्वपूर्ण है, अगर कोई प्रेम और भक्ति से अर्पित करता है तो भगवान स्वीकार करते हैं। But the best service is service done according to the desire of the Lord. लेकिन सर्वश्रेष्ठ सेवा होती है जब हम उस सेवा को करते हैं जैसे कि भगवान चाहते हैं। Just like that, we can, Krishna is willing to satisfy any desire according whatever it may be, but then it may be karma yoga or niskama karma yoga. तो भगवान तो हमारी हर एक इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कर्म योग या निष्काम कर्म योग। The best way is to accept what Krishna desired. सबसे अच्छा ये है कि उस वस्तु को स्वीकार करना जो भगवान कृष्ण चाहे। And according to the circumstance. और फिर परिस्थिति के अनुसार। Just like I was speaking about Devotee. So Devotee, she according to the circumstance, she took the best option. जैसे कि मैं देवहूति माता के बारे में बता रहा था, तो देवहूति माता ने उस परिस्थिति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ कार्य था वो की। And according to the circumstance, this is the best that Kubja can do. तो परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर ये सर्वश्रेष्ठ कार्य था जो कुब्जा ने उसके अनुसार किया। So also we should try to serve Krishna in the best way we can. तो हमें भी भगवान कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ तरीके से सेवा करने का प्रयास करना। But Srila Prabhupada said that this is a gradual process. लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये धीरे-धीरे होता है। So we should allow Krishna to purify us in the way that he sees fit. तो हमें भगवान कृष्ण को यह अवसर देना चाहिए कि वो हमारा शुद्धिकरण करे जिस प्रकार से वो चाहते हैं। And because Krishna speaks Bhagavad Gita, Uddhava Gita, and so many devotees explain the Bhagavatam. क्योंकि भगवान कृष्ण भगवद गीता, उद्धव गीता बताते हैं और कई सारे भक्त उस पर व्याख्या भी करते हैं। Before we can act purely, we must purify our hearts. तो ये हमें समझना है कि इससे पहले कि हम शुद्ध रूप से कार्य कर पाए, हमें अपने हृदय को शुद्ध बनाना पड़ेगा। And we should have the faith that however my life is unfolding, that if I'm trying to serve Krishna to my best ability, then Krishna will arrange for things to happen in a favorable way. तो हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम भगवान की इच्छा के अनुसार वो भी भगवान चाहते हैं जो हम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारा जीवन आगे जाता है तो भगवान हमारे लिए सबसे अच्छी परिस्थितियां बनाएंगे। But favorable means favorable according to the best way I can advance, not favorable to my likes or desires. तो अनुकूल परिस्थितियों का अर्थ ये होता है कि भक्ति के लिए क्या अनुकूल है, ऐसा नहीं कि मैं मेरी भक्ति के लिए क्या अच्छा चाहता हूँ। So Krishna will allow us to become purified very quickly if we just accept the service or the lifestyle, or whatever the circumstances in life that come to us. तो भगवान कृष्ण हमें बहुत जल्दी शुद्ध कर देंगे अगर हम हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है उसको हम अगर स्वीकार करें। This is called santushtaha, that we accept things.
we are satisfied with yadadicchaya, which comes of its own accord. तो इसको संतुष्टि कहते हैं कि जो भी अपने आप से हमारे पास जो भी आता है उसको हम स्वीकार करते हैं और उसमें संतुष्ट। And we don't try to force Krishna to act in a certain way. हम भगवान को किसी एक प्रकार से कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करते। Usually everyone is very anxious to advance as quickly as possible. हर एक व्यक्ति भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए चाहता है। But we can't force Krishna. We should have faith that Krishna knows the right dosage of happiness, difficulty, to bring us to the point of surrender. लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान जानते हैं कि हमें कितना सुख और दुख देना है जिससे कि हम पूर्णता के पद पर आ पाएं। So, even though Krishna apparently appeared to act according to, as it says here, imitating the manners of human society, made himself comfortable by sitting on the bed. हालांकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा लिखा है कि भगवान एक सामान्य व्यक्ति की तरह एक उस पलंग के ऊपर बैठ गए और अपने आप को। But Krishna ultimately showed his renunciation. He had no desire to gratify his senses. लेकिन फिर भगवान ने अपना वैराग्य वहाँ प्रदर्शित किया कि भगवान किसी प्रकार से अपनी इंद्रियों को तुष्ट नहीं करना चाहते। But he acted as if he was interested. लेकिन वो इस प्रकार से दिखा रहे थे, कार्य कर रहे थे कि उनको इसमें रस है। So just like Bhishma, when he was being elected or being not elected, but being nominated as to rule over the Rajasuya sacrifice, because he was a brahmachari, and very unusual that a kshatriya will be a brahmachari. तो लेकिन हम देखते हैं कि राजसूय यज्ञ में जब विष्णुदेव को एक प्रमुख स्थान के लिए चयन किया जा रहा था, हालांकि ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक ब्रह्मचारी क्षत्रिय हो। They said, "You are so glorious, you don't want to get married." सबने कहा कि आप तो बहुत महान हैं कि आप विवाह नहीं करना चाहते। But he said, "No, Krishna is a better brahmachari than I am." लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे से अच्छे ब्रह्मचारी तो कृष्ण हैं। Because Krishna, in the midst of the most beautiful damsels in existence, he simply left. क्योंकि कृष्ण ने इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियों के बीच में से भी वो निरंतर होकर चले गए। If I would have been in that circumstance, I probably wouldn't have left. बोले अगर मैं उस स्थिति में होता तो हो सकता है मैं नहीं जाता। And so he said, therefore Krishna is the perfect brahmachari. तो इसीलिए भगवान कृष्ण सबसे बड़े ब्रह्मचारी। Now when the gopis heard that, they laughed. लेकिन जब गोपियों ने ये सुना तो वो हंसने लगे। Durvasa Muni said, I want you to say understand two things. दुर्वासा मुनि ने कहा कि भाई मैं आपको दो चीज समझाना चाहता हूँ। And you have to repeat it. आपको ये दोहराना होगा। One of those things is that Krishna is a brahmachari. उसमें से एक चीज ये है कि कृष्ण ब्रह्मचारी। And so they're thinking, what kind of brahmachari is he? He's always after us. तो वो क्या सोच रहे हैं कि ये कैसा ब्रह्मचारी है, ये तो हमेशा हमारे साथ है। Where unfortunately, in Kali Yuga, sometimes we have these so-called brahmacharis. कलयुग में भी हम देखते हैं कि ऐसे तथाकथित ब्रह्मचारी। They're thinking that they're not thinking, well, maybe in the future I'll get married. They're thinking they're becoming overwhelmed by material desire. तो वो जो है वो भौतिक इच्छाओं के द्वारा हमेशा प्रभावित रहते हैं। But instead of accepting to get married, they think, let me solve this problem in a different way. तो विवाह करने के बजाय वो सोचते हैं कि लाओ मुझे इस समस्या का कुछ अलग तरीके से। And that will not be very
They forget that Krishna is within the heart. वो भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण उनके हृदय में हैं। And so they may think, well, I can do something on the side. No. वो सोचते हैं कि मैं कुछ अलग कुछ साइड का रास्ता है, But there is no side for Krishna. No. लेकिन कोई ऐसी दिशा नहीं है जहाँ भगवान नहीं। No. Bahir Nisingho, Hridaye Nisingho. He's outside and inside. No. तो भगवान तो अंदर भी है और बाहर भी है। And you can't hide from Krishna. आप भगवान से नहीं छुप सकते। So this is Krishna acting in an apparent ordinary way. यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान दिखावे के रूप में एक सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे हैं। Because this is the only way he can purify her. तो यही क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि यही एक रास्ता था जिससे वो उनको शुद्धिकरण कर सकते। So in the beginning of the chapter, and I will conclude with this, the beginning of this chapter, it says, Sarvatma Sarvadarshinaha. तो यहाँ पे इस अध्याय की शुरुआत में बताया गया है सर्वात्मा सर्वदर्शन। This means that even though Uddhava was giving her a report of what's going on in Vrindavan, he was already in Vrindavan. तो हालांकि उद्धव जो थे वो भगवान को रिपोर्ट दे रहे थे कि भाई वृंदावन में सारी चीजें कैसे चल रही है, लेकिन भगवान को वृंदावन नहीं, because Krishna never leaves Vrindavan. क्योंकि भगवान तो कभी वृंदावन छोड़ते ही नहीं। And this is why at the beginning of the 41st chapter of this canto, Akrura he had a vision of Krishna, and then he saw Mahavishnu, he saw Vishnu. तो 41 नंबर के अध्याय में हम देखते हैं कि अक्रूर जी ने कृष्ण का दर्शन किया और महाविष्णु का भी दर्शन किया। Because this was right at the border of Vrindavan. तो वो वृंदावन की एकदम सीमा पर था। So Krishna was saying to Akrura, in my Krishna form I'm staying here, but in my Vishnu form I'm going with you. भगवान ने अक्रूर जी को बोला कि मैं अपने कृष्ण के रूप में यहीं वृंदावन रहूंगा और विष्णु के रूप में रहूंगा। And Krishna stays in Vrindavan in the hearts of all the residents of Braj. तो भगवान कृष्ण के स्वरूप में वृंदावन वासी, हर एक वृंदावन वासी के हृदय में। So Sarvatma Sarvadarshanam means that he was there, he saw everything, he heard everything that Uddhava said. सर्वात्मा सर्वदर्शन का अर्थ ये है कि वो वहीं पर थे और उन्होंने उद्धव ने जो भी देखा, जो भी उन लोगों ने बोला, वो सब भगवान ने देखा और सुना। But to make his devotee happy, he heard the report. लेकिन अपने भक्त को खुश करने के लिए उन्होंने वो रिपोर्ट भी सुना। And he also heard the report because he was happy to hear about Vrindavan again. उन्होंने रिपोर्ट इसलिए भी सुना क्योंकि वो वृंदावन के बारे में सुनकर बहुत खुश हो रहे हैं। This is his Jagannath aspect. Whenever he can hear about Vrindavan, he becomes very happy. तो ये उनका जगन्नाथ का रूप है कि भाई जब भी वो वृंदावन के बारे में सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। And then, but it also means that he saw Sarvadarshinaha. He could see the desire of Kubja. And he saw the best way to satisfy her desire. So surrender means we put our lives in the hands of Krishna, and we understand he's Sarvadarshinaha. He knows what we need and he will give us what we need. शरणागति का अर्थ ये है कि भगवान सर्वदर्शन है, ये समझते हुए हम अपने आप को भगवान को सौंप दे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे साथ क्या है। This is why Krishna says in Bhagavad Gita Yoga Vishamyaham that Yoga Kshema Vahamyaham, that I will Yoga Kshema I will give you, and Shema I will preserve, and I will give you what you need for your devotional service, and I will preserve all those things
in your devotional life that you have, and I will give you what you need, even though you may not like what I give you. तो भगवान बताते हैं गीता में योग क्षेमम वहाम्यहम्, इसका अर्थ ये है कि भगवान बताते हैं कि आपके पास जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा और मैं जो आपको जरूरत है वो दूंगा, चाहे आपको वो अच्छा लगे या ना लगे। So this is the nature of faith. By the way Krishna acts, we develop faith, we develop tolerance, we develop humility. भगवान ऐसे प्रकार से कार्य करते हैं कि हमारा श्रद्धा बढ़े, हमारा सहिष्णुता बढ़े और ये सब। But if we don't accept the way that Krishna arranges things in our life, then these necessary qualities for bhakti will not develop very quickly. लेकिन अगर हम भगवान के दिए हुई चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हमारी भक्ति विकसित नहीं हो पाएगी। So we should just let Krishna do his work. तो हमें भगवान को उनका कार्य करने दें। And we will benefit to the greatest degree. और इससे हमारा सर्वश्रेष्ठ लाभ। So these are some thoughts on these verses. Stop here. Any comment or question? Thank you so much, Maharaj. It was a very insightful class. Very grateful for the class. Maharaj, my question is in relation to Devotee Mata's quality of surrender. You very nicely mentioned that according to the situations, you have to analyze, and that is the nature of a servant. So, and at last you also mentioned that surrender means to give our life in the hands of Krishna and let him act. So, Maharaj, my question is, in our devotional life, certain situations come when we get confused, like Krishna told Arjuna to fight, but Lord Vishnu told Devotee Maharaj not to fight. So it is best that we ask our superiors always, especially in tough situations, that what is my dharma? Should I surrender? Means both surrender. Arjuna surrendered by fighting. Devotee Maharaj surrendered by not fighting. But in our services, not always we can access our superiors. So, what should be some principles or some factors we can think that we can decide that irrespective of our attachment and aversion, irrespective of our selfish interests, we can understand Krishna's hand and Krishna's intelligence. Hari Guru Vaishnava Bhagavata. Oh, I'm sorry. प्रश्न ये है कि हम कई बार देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है कि जहाँ पर हमें धर्म क्या है ये समझना होता है। तो कई बार बताया जाता है कि भगवान बताते हैं करो, कई बार भगवान बताते हैं नहीं। तो हम अपने वरिष्ठों से पूछते हैं, लेकिन कई बार वरिष्ठ भक्त भी ज्यादा हम नहीं पूछ सकते उनसे। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? क्या कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसके आधार पर हम डिसाइड कर सकें कि परिस्थिति? Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Therefore, Krishna gives us 5 ways of confirming what he wants. तो हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, भगवान हमको 5 तरीके दे रहे हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। As Hari, he speaks to us from within the heart. भगवान हरि से मार्गदर्शन देते हैं। But sometimes we may not be able to understand the message. लेकिन कई बार हम उस मार्गदर्शन को समझ नहीं पाते। Therefore, Guru Vaishnava, the most secure way is that we approach Sri Guru and the Vaishnava. सबसे सलामत तरीका ये है कि हम श्री गुरु और वैष्णव को पाएं। And
to confirm what they say, then we take shelter of the Bhagavatam and Bhagavad Gita. और फिर उसका पूर्ण निश्चय करने के लिए उनकी बातों को हम गीता और भागवत से मिलित करते हैं। So if we keep our faith anchored in these 5 sources of inspiration, then we can be pretty sure that we will understand what to do. तो अगर हम अपनी श्रद्धा को इन 5 वस्तुओं में रखेंगे अच्छे से, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस परिस्थिति में क्या है। But the best way to develop dependence on Paramatma is to do Sankirtan. सबसे अच्छा तरीका परमात्मा के ऊपर विश्वास लाने का है संकीर्तन। Then you'll be put into, you're all out there all alone, in confronting material energy. तो संकीर्तन में आप बाहर होते हो, जहाँ पर भौतिक शक्ति के साथ आसक्त होना forces us to take shelter of the Bhagavad and the Gita, and the Guru and the Vaishnavas and the Lord in the heart. तो ये हमें जबरदस्ती हमें हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता का शरण लेना ही पड़ता है। We can't ask the Guru or the Vaishnavas, or we don't have our Bhagavatam. We have a Gita in the hand, but we can't take time to read it. Have to figure out what to say right now. उस समय पर हम गुरु वैष्णव कोई नहीं होता है, ना ही हम पुस्तक तो होती है, लेकिन इसको खोल कर तब थोड़ी पूछ सकते हैं। Should I try to convince this person, or have I said too much? Have I not said enough? Did I ask for too much donation? All these things can happen. मुझे इस व्यक्ति को और पूछना चाहिए, और समझाना चाहिए, या मुझे और दान मांगना चाहिए, ये सब चीजें हमारे मन में। So we have to beg Chaitanya and Nityananda, please enlighten me. फिर हमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से याचना करनी पड़ती है कि कृपा करके मुझे मार्गदर्शन। And if we're sincere, they'll give us the right message. अगर हम गंभीर हैं, तो हमें सच्चा संदेश प्राप्त होगा। And sometimes that message may cause the book to be distributed, and sometimes it may not. ये संदेश से कभी-कभी पुस्तकें वितरण होगी, कभी-कभी नहीं। Because the result ultimately depends on Krishna. क्योंकि ये सारी बातें भगवान पर ही आती हैं। We want to give Krishna results. तो क्योंकि लेकिन हम तो सारा श्रेय भगवान को देते हैं। But we're not attached to the ultimate result. We accept it as Krishna's. हम अपने जो अंतिम फल से आसक्त नहीं होते। That's the best we can do. यही है सर्वश्रेष्ठ जो हम करते हैं। And Krishna puts us in those circumstances to put us in a helpless condition. भगवान हमें ऐसी असहाय परिस्थिति में रखते हैं। Then it's easier to surrender to Him. क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में भगवान का शरणागत होना आसान है। But if we allow the false ego to act, then we'll say, I'll figure out how to get out of this helpless condition. लेकिन अगर हम अपने अहंकार को बीच में लाएंगे, तो फिर हम सोचेंगे कि मुझे पता है इस परिस्थिति में कैसे बाहर। I'll adjust the material energy. मैं भौतिक शक्ति को थोड़ा एडजस्ट कर दूं। And then that usually results in difficulty. फिर उससे और परेशानियां आती। But that difficulty, if we remain sincere, that difficulty will help us to come to the point of surrender. लेकिन अगर हम गंभीर रहेंगे, तो यही मुश्किल परिस्थितियां हमें पूर्णतः दिला देंगी। So we either get voluntary difficulty or imposed difficulty. हमें ये देखना है कि हमें अपने स्वतंत्रता से इन मुश्किलों को स्वीकार करना, या फिर ये मुश्किलें हम पे थोपी। That choice is ours. ये हमारे पास है। Difficulty will be there. Do I want to accept the difficulty, or do I want to create it by thinking that I will do a better job than Krishna? परेशानियां तो रहेगी। अब चाहे हम उस परेशानी को स्वीकार कर लें, या तो हम और बड़ी परेशानियों को बढ़ाए, ये सोचते हुए कि मैं इसको अपने हिसाब से कर सकता हूँ। और कोई प्रश्न? Okay, looks like everyone's hungry, so we'll stop here. Shri Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Nitai Gaura Premanandi. इस होली में गुरु प्रसाद स्वामी महाराज की